Hello and welcome to the Wonderland. Dear students, today we are going to read a story from the prose section of your textbook of English class 7, and the story is A Mad Tea Party. Dear students, this story is adapted from Alice in Wonderland or The Adventures of Alice. And the story has been written by Lewis Carroll. Dear students, have you ever seen animals speaking like human beings? And I think your answer is in negative. No, they don't speak like human beings. वो इंसानों की तरह बात नहीं करते हैं. आज जो हम आपके सामने जो स्टोरी लाए हैं वो है अ मैड टी पार्टी. ये अडाप्ट की गई है फ्रॉम अलाइस इन वंडरलैंड और द एडवेंचर्स ऑफ अलाइस और अलाइस एडवेंचर्स. ये स्टोरी जो है लिखी है लेवाइस कैरोल ने. और यहाँ मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या आपने कभी जानवरों को इंसानों की तरह बोलते हुए देखा है? और आपका जवाब नेगेटिव में होगा, इनकार होगा. नहीं, जानवर कभी इंसानों की तरह नहीं बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं. वी कांट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, दे हैव द फिक्स्ड लैंग्वेज सेट. तो यहाँ पर इस स्टोरी में यू विल फाइंड दैट एनिमल्स स्पीक एंड बिहेव इन अ वेरी वेरी ह्यूमन वे. यहाँ पर जो एनिमल्स हैं वो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलते हैं और इंसानों का रोल भी निभाते हैं. तो ये स्टोरी जिस स्टोरी में एनिमल्स इंसानों की तरह बात करेंगे, इंसानों का रोल निभाएंगे, उनका रोल अच्छी तरह से कर पाएंगे, उस स्टोरी को हम कहते हैं फेबल. सो फेबल इज अ स्टोरी इन विच एनिमल्स स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स. तो ये एक फेबल है. एंड दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल अलाइस falling through a rabbit hole and finding herself in a silly and nonsense world. प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी कहानी है, एक लड़की, छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम है अलाइस. Here I have, you'll find in this picture, there is a girl, little girl, she is Alice. And there is another character here, it is rabbit. You'll find that Alice is following the rabbit into its hole. यहाँ पर Alice जो है ये rabbit को उसके hole में follow करती है. Why does, here the question arises, why does Alice follows a rabbit into its hole? यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अलाइस ने रैबिट को क्यों फॉलो किया. What is the reason behind it? There should be a logic. तो what happens? It is out of curiosity and nothing else. Actually, Alice finds a rabbit wearing a watch. Alice क्या देखती है? वो रैबिट को बाहर देखती है एंड द रैबिट इज हैविंग अ वॉच. उसके पास एक घड़ी होती है. एंड अलाइस इज कंफ्यूज्ड. अलाइस इज कंप्लीटली कंफ्यूज्ड दैट एन एनिमल इज हैविंग अ वॉच. एक जानवर के पास एक घड़ी है, तो किस लिए है? she becomes curious and she wanted to know the reason behind it. वो जानना चाहती है कि इसकी वजह क्या है. Why is that very rabbit wearing a watch? उसके पास ये watch क्यों है, घड़ी क्यों उसने पहनी है? Now she was curious and she wanted to know it and she decided to follow the rabbit into its hole. और उसने फैसला किया नहीं, मैं उसको follow करूँगी,
उस रैबिट को फॉलो करूँगी एंड आई विल फाइंड आउट द रीज़न, मैं इसकी वजह जान जाऊँगी. So she follows the rabbit into its hole and finds herself into a new world, into a strange world, where strange animals speak like human beings. और जब उसको फॉलो करती है, when she enters it, she finds a completely different world. वो completely दूसरी दुनिया, बदल दुनिया देखती है. Here the writer Lewis Carroll mentions the bookshelves on the sides of the hole. यहाँ पर राइटर जो है वो होल के साइड में मेंशन करता है बुक्स को, दैट देयर बुक शेल्व्स ऑन द साइड्स ऑफ द होल. जो ये होल है, here there are some book shelves inside the hole, on the sides of the hole. उसके साइड में, होल के साइड में बुक्स हैं, बुक शेल्व्स हैं. Here Lewis Carroll perhaps he wants to say that it is an escape into literature, because Alice has never been exposed to the external environment, to the world. ये जो वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है, to the real world, to the experience. She has not any special experience. उसकी कोई एक्सपीरियंस नहीं, उसका कोई तजुर्बा नहीं है. Now she is exposed to the real human world. तो यहाँ पर इसका इशारा देता है because of this book shelves, ये completely different world है उसके लिए. तो जब ये लाइस उसको फॉलो करती है, what does she find out? She is confronted in different situations. There are different animals, different and curious animals. They are all alone there in the wonderland. ये जब उस दुनिया, उनकी दुनिया में जाती है, उन एनिमल्स की दुनिया में जाती है, तो वहाँ क्या देखती है? वहाँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, एंड दे बिहेव इन अ वेरी ह्यूमन वे. वो बिल्कुल ह्यूमन इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं और उन्हीं की तरह बोलते भी हैं. नाउ शी इज़ कन्फ्यूज्ड. अब ये कन्फ्यूज़ होती है, उसका कन्फ्यूजन जो है ये बढ़ जाता है. और उसके बाद ये जो स्टोरी है, A Mad Tea Party, it is an example of humor. यहाँ पर ह्यूमर है. There is a lot of humor in the story. इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमर है. यहाँ पर मजाक है, मज़ा आया है. So let's find out what kind of humor is there in the story. Now this is the scene, first scene. A tea party is there. There are certain animals, strange animals. A march here. Here is the march here. Is the march here. And the hatter. Here it is the hatter. And a dormouse. Dormouse is here. You'll find it here. Here it is dormouse. These three animals, they are having a tea party. ये तीन जानवर जो यहाँ पर बैठे हैं, एक तो रैबिट है, हैटर है और डोरमाउस है. They are having a party under a tea party under a tree in front of a house. मकान के सामने, एक मकान के सामने ये टी पार्टी इनकी होती है. एंड द टी पार्टी इज अंडर अ ट्री. एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. अ टेबल इज सेट. एक टेबल यहाँ पर सेट किया हुआ है, लगाया हुआ है. एंड अलाइस joins the party. अलाइस आती है. when अलाइस saw these animals,
that they are having a tea party. Alice comes and joins them. Alice आती है और उनके साथ join करती है. A dormouse is sitting between Hatter and Rabbit, and he is fast asleep. जो डोरमाउस होता है ये गहरी नींद में होता है और जो हैटर और रैबिट है उनके बीच में लेटा हुआ है. एंड दे आर यूजिंग हिम एज ए कुशन. ये उसको तकिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. एंड दे आर टॉकिंग ओवर डोरमाउस के हेड के ऊपर वो एक दूसरे से बात करते हैं. हैटर और रैबिट, बीच में डोरमाउस फंसा हुआ है. एंड व्हेन अलाइस saw this situation, she feels sorry for the dormouse. जब अलाइस देखती है उसको तरस आता है इस डोरमाउस पर. and she feels that the dormouse is in trouble. They are using him as a cushion. वो इसको तकिया समझ का तकिया का इस्तेमाल, उसको तकिया का काम उससे लेते हैं और उसको उस पर तरस आता है. Very unfortunate for the dormouse, thought Elias. Perhaps it is asleep. I suppose it doesn't mind. तो Elias कहती है it is very unfortunate for the dormouse. ये dormouse के लिए बहुत ही बदकिस्मती है. Because I said earlier that she felt sorry for the dormouse. तो Elias समझते हैं I think I suppose it doesn't mind. Perhaps the dormouse doesn't mind being used as a cushion. शायद dormouse इसको मतलब माइंड दिल पे नहीं लेता है that he is being used as a cushion. उसको वो तकिया का इस्तेमाल करते हैं. तो Elias सोचती है कि शायद उसको बुरा नहीं लगता है. The table was a large one, but the three were all crowded together at one corner of it. ये जो टेबल है, it is a large table. ये टेबल बहुत बड़ा है और ये जो तीन हैं ये एक कोने में सिमट गए थे. No room, no room, they cried out when they saw Elias coming. There is plenty of room, said Elias angrily, and she sat down in a large armchair at one end of the table. So when they saw Elias coming towards them, जब उन्होंने देखा Elias हमारी तरफ आ रही है and she is going to join us, कि वो हमारे साथ join करेगी, वो हमारे साथ बैठेगी. And they cried out, और उन्होंने चिल्लाया, no room, no room, there is no room for you. यहाँ पर आपके लिए कोई जगह नहीं है, no room. Then Elias said that there is plenty of room here. यहाँ पर काफ़ी जगह है. What are you saying that there is no room? यहाँ पर कोई जगह नहीं है. There is plenty of room. यहाँ पर काफ़ी जगह है. And she sat down in a large armchair of one end of the table. Then Elias sat down. वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है. Have some wine, the March Hare said in an encouraging tone. तो March Hare जो है rabbit. Then the March Hare asked Elias. He invited Elias to have some wine. So he invited Elias for wine. उसने उसको कहा कि have some wine. चलो थोड़ी सी शराब हो जाए. Elias से कहा. Elias looked all around the table. There was nothing to be seen on it except tea. I don't see any wine, she remarked. So when March Hare invited Elias for wine, she looked around and she found nothing except a cup of tea. तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई शराब नहीं है, सिर्फ चाय है. I don't see any wine, she remarked. उसने कहा कि there is no wine here. यहाँ पर कोई शराब नहीं है. There isn't any, said the March Hare.
Now Marcia replied, there isn't any wine. यहाँ पर कोई शराब नहीं है. Then it wasn't very polite of you to offer it, said Alice angrily. तो Alice को गुस्सा आया. She became very angry and she said that it is not polite. ये ठीक नहीं है of you to offer wine when there is no wine. Alice ने गुस्से में कहा कि ये ठीक नहीं है कि आप शराब ऑफर करो लेकिन शराब हो ही नहीं. It is not good. It wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the Marcia. Then Marcia replied, okay, you say that it is not good to offer anything when there is nothing in it. अगर कुछ नहीं है फिर ऑफर करना कि नहीं आप have some wine when there is no wine, have some tea when there is no tea. शराब ऑफर करना जबकि शराब है ही नहीं, चाय ऑफर करना जब चाय है ही नहीं, तो ये ठीक नहीं है. ओके, लेट मी admit it that I was wrong, but was it justified for you to sit sit here without invitation? You came here uninvited and sat down. आप uninvited यहाँ पर आ गए. आपको किसी ने invite नहीं किया था, किसी ने दावत नहीं की थी. And you came uninvited. आप बिना दावत के यहाँ पर बैठ गए. क्या ये ठीक है? Is it right? Are you justified? क्या आप ठीक हो? I didn't know it was your table, said Alice. It is late for more than 3. I didn't know it was your table, said Alice. तो Alice ने कहा, I didn't know it was your table. मुझे पता नहीं था कि